What is the achievements? So Kharavali is the third of the ruler of the Mahamegavana. The third ruler actually, uh, 3 number dynasty of the Kalinga. Kalinga modern day Odisha was not only great conqueror but also a significant patron. Actually, Kharavela belongs to the Chedi dynasty and Mahamegavana. Kharavela, Oiro Kharavela, conqueror. Not only great conqueror, वो सिर्फ माने से केवल राज्य को जय कर बट ऑल्सो एक सिग्निफिकेंट पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर मीन्स स्थापत्य कला and religion dharma and most of the actually most of our knowledge comes from Hathigumpha inscriptions. Actually Kharavela, actually if you know Kharavela को जानबो कहले we know about the we have to see Udayagiri, Khandagiri and Hathigumpha inscriptions. Actually everything see art and architecture written inscribed মানে লেখা ହେଇଛି ଖୋଦନ ହେଇଛି କ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ on the rock ଉପରେ on the cave in the cave of Kharavela जो उदयगिरी cave ତା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି. तो की कल्चरल अचीवमेंट्स एक्चुअली मुख्य की मीन्स मुख्य कल्चरल अचीवमेंट्स कौन? आर्किटेक्चरल पैटर्नेज उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स. आर्किटेक्चरल पैटर्नेज एक्चुअली खारल पैटर्नेज माने पृष्ठपोषकता. पैटर्नेज माने होची पृष्ठपोषकता. उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स से खारबेला एक्चुअली खारबेला ऑर्डर देथिले माने हाउ माने एट दैट टाइम बिफोर 2000 सेंचुरी 2000 वर्ष 12 इयर्स एगो से केमती हाउ माने हु एंड हाउ किपरि एटा लेखा ला रिटेन्स. सो बाय द पैटर्नेज ऑफ द किंग खारबेला देथिले निश्चित माने ऑर्डर किंग ऑर्डर देथिले निश्चित. Kharavela most enduring legacy in the excavation of residential caves. Actually, the Udayagiri and Khandagiri caves, it is used for the monastery, the Jain monastery, Jain monks. Actually, they built for Jain monks. Kharavela and most enduring legacy is the excavation of excavate. Actually, in the cave, he actually built theory करते construct theory करते पर the कहाँ पे Jain. Kharavela was the belongs to Jain dharma, Jainism. So residential cave of the Jain monks. Rani Gumpha, largest Gumpha hochi Rani Gumpha. Rani Gumpha the largest and most other Rani Gumpha, Ganesha Gumpha 13, 16. Largest and the most famous double story cave. Double story देखियो अपन देखिथिबे उदयगिरी खंडगिरी double story माने दितला 2 stair buildings. 2 story cave है उदयगिरी known for its elaborate bridges and sophisticated sculpture work. So many sophisticated sculpture works तात्पर्य. Actually so many figures statue it is built in Hathigumpha, Rani Gumpha. Hathigumpha elephant caves contain the famous inscription detailing his reign and his marvel of rock cut architectures. Hathigumpha, this is the elephant caves. Hathigumpha is elephant caves contains famous inscription detailing his reign. रानी गुम्फा रे सो लिखा है अबाउट तांकर रेन तांकर काली माने तांकर समय एंड इज ए मार्बल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर. रॉक को काट के माने जो पत्थर को काटी करी आर्किटेक्चर कला स्थापत्य से करथिले. खारबेला प्रमोशन ऑफ जैनिज्म. खारबेला वाज ए डिवोट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म फॉलोअर ऑफ जैनिज्म. ही इज क्रेडिटेड विथ रिकवरिंग द कलिंग जिन्न. एक्चुअली खारबेला कोन करथिले रिकवर करथिले कलिंग जिन्न मूर्ति को द आइडल ऑफ द जैन तीर्थंकर that had been taken away by the Nanda Empire. Actually, Magadha Nanda Empire he taken away he capture कर नहीं थिले the जैन जो तीर्थंकर idol को and खारबेला recover करथिले. And the Nanda Empire empire century earlier माने किसी वर्ष पूर्वे and he convened a great council of Jain monks at Kumari Parvati. He convened a great council of Jain monks. Council करथिले जो हमारे बौद्ध जो जैन सम्मेलन काउंसिल्स परिषद जमती आमर जो बौद्धंकर 4 4टा होता कौन 4 आमर कन्वेंशन होता काउंसिल होता. फास्ट होता कौटी राजगृह रे तापर होता पाटलिपुत्र रे सेमती वैशाली रे तापर पाटलिपुत्र रे देन होता आमर काश्मीर रे होता सेमती माने कुमारी पर्वत उदयगिरी करथिले से माने उदयगिरी मीन्स आमर ए ओडिसा रे टू कंपाइल द जैन स्क्रिप्चर जैन स्क्रिप्चर को कंपाइल करथिले माने संकलन करथिले स्क्रिप्चर्स. आर्ट एंड स्कल्पचर. तो आर्ट रे व्हाट इज द एडवांटेजेस बा तांकर कंट्रीब्यूशन कोन माने दान कोन अछि. द रिलीफ स्कल्पचर्स इन द केव्स ऑफ रिप्रेजेंट ए हाई पॉइंट ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड स्कल्पचर. द रिलीफ sculptures in the caves represent a high point in early Indian art.
इंडियन आर्ट में जो आर्ट स्कल्पचर, आर्ट अर्थ कला, स्कल्पचर अर्थ तात्पर्य, केप रिप्रेजेंट हाई पॉइंट इन एर्ली इंडियन आर्ट। एक्चुअली एट दैट टाइम से समय रे व्हाट आर द माने इंडियंस वेयर ऑफ माने बेस्ट इन आर्ट एंड एजुकेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एक्चुअली एवरीबडी सीन इन द वर्ल्ड, समस्त देखि परछंती। सो इबी खराबळ नॉट एस्केपेड न करता इन द केव, सो हाउ विल नो अबाउट द art and the architecture of the ancient India, ancient Odisha, हम केम जानते हैं? तो the depict a scene of the daily life, that and royal procession, माने कौन से what he written, कौन से लिखे थे? He has written royal procession, daily life, music, dance, religious symbols, providing everything, royal procession, music, dance, and religious symbols, providing a window into the social life. Actually, of the first and second century, फास्ट प्रथम और द्वितीय सेंचुरी शताब्दी समय बीसी समय व्हाट वाज द डेली लाइफ डांस रॉयल प्रोसेसन माने ये किंग कर रूल कोन केंदी रूल रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन से सब रिलीजियस सिंबल्स ही डेपिक्ट करथिले, ही एस्कैपेट करथिले इन द केव रे सब करथिले। एंड वी कैन नो हम जानि परछि से समय रे सीइंग द इमेज देखि कि हम से जानि परछि पब्लिक वेलफेयर से पब्लिक पे कोन काम करथिले खारबेल and infrastructure public welfare माने पीडब्ल्यू जो काम हो जे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शंस। तेणु हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन मेंशन्स दैट इन इज फिफ्थ रेगनल ईयर, हाथी गुंफा केबे हितला तांकर पंचम वर्ष रे फिफ्थ रेगनल इयर्स ही रिनोवेटेड ए कैनल दैट हैड बीन बिल्ट बाय कैनल से करथिले गोटे एक्सटेंडिंग इट टू हिज कैपिटल्स। कौन करथिले गोटे बीन बिल्ट बाय द नंदस 3 इयर्स प्रायर, आगे जो नंद जो कैनल करथिले he renovated करथिले। एक्चुअली से माने एनी हाउ द कैनल मे बी द वेस्ट कंडीशंस एनी द वाटर इज ब्लॉकेज एनीथिंग प्रॉब्लम्स he again renovated means he again dug it by the Nanda which was made by the Nanda मध्ये भल काम करथिले extending into the his capital कलिंग बढ़ई थिले his capital कलिंग पंदान थिले कलिंग नगर। नंद की थिले? नंद वाज थिले बुद्ध नंद वाज रूलर ऑफ मगध, मगध मीन्स बिहार, से बिहार टू एक्सटेंड करथिले कैनाल को टू कैपिटल कलिंग नगर। कलिंग नगर मीन्स कोठी जाजपुर रे अछि, अंकर खारबळंकर कैपिटल कोठी थिबो जाजपुर। दिस शोज ए कल्चरल कमिटमेंट टू द स्टेट लेड इरिगेशन एंड पब्लिक वर्क्स। तो से कल्चरल कमिटमेंट थिला तांकर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर पब्लिक वर्क्स आक मध्ये दे मन ध्यान दउथिले, दे पैटर्नाइज दउथिले। पैटर्न ऑफ म्यूजिक डांस रे कोन सा पैटर्न दउथिले? खारबळ वाज ए लवर ऑफ द फाइन आर्ट्स, वाज ए लवर ऑफ फाइन आर्ट्स। एक्चुअली very good, very powerful and very innovative king थिले, was king, was a lover of fine arts. He organized various musical performance, dance and the festival to entertain his subjects like अशोका। अशोका जमती कौन करथिले फॉर एंटरटेनमेंट पई से बिना यज्ञ रिचुअल्स एंड वेरियस फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करथिले, जो कुंभ मेला दिस टाइप्स ऑफ जो कर्ण जरे हमर करथिले हर्षवर्धन, दिस टाइप्स ऑफ खारबेल फेस्टिवल्स एंड टू एंटरटेन द ही सब्जेक्ट। एंड सब्जेक्ट मीन्स कौन? ये लोक मान कहते सब्जेक्ट्स माने प्रजा मान कहते टाइरानिंग। earnings him the subject, earnings him the title of Gandharva Veda Buddha expert in the science of music। Actually various of music festivals for the entertainment ପାଇଁ ସେ arrange କରୁଥିଲେ many performances, dances, festivals and earning him the title of Gandharva Veda। हमको कहला गंधर्व वेद बुद्ध एक्सपर्ट। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस माने कौन थिला, क्या था, कौन थिला? खारबेल रेन मार्क ए गोल्डन एज फॉर कलिंग, कलिंग के लिए गोल्डन एज था। हिज कल्चर अचीवमेंट थिला रिफ्लेक्ट बैलेंस रूलर हु कंबाइन मिलिटरी माइट विथ रिलीजियस टॉलरेंस। नॉट ओनली हिज माने कंकरर, ए गुड कंकरर मींस विजेता नथिले, नॉट ओनली माने एक्सपर्ट इन माने बेस्ट इन द मिलिटरी, ही आल्सो बैलेंस आल्सो गुड अचीवमेंट्स इन रिलीजियस टॉलरेंस माने धर्म को टॉलर करथिले, माने एवरी ही टॉलरेट एवरी रिलीजन्स। इंडिया इज सेकुलर कंट्री माने से बहुत धर्म को नहीं सौथिले, से डॉट इनटॉलरेट नथिले, अन्य धर्म को मध्य कोऑपरेट करथिले, टॉलरेट करथिले। एंड डीप एस्पिसिएशन ऑफ द एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअली डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल माने भौतिक माने जो हमर धार्मिक एंड एस्थेटिक मीन्स कोन ए जो हमर वैराग्य दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स माने डेवलपमेंट ऑफ हिज किंगडम। ए जैन मानकर जैन मंक को से फ्लोरिश करथिले। फ्लावरिंग ऑफ द जैनिश कल्चर ताको फॉल फ्लावरिंग अर्थ होची माने प्रस्फुटित करथिले, फ्लोरिशिंग करथिले। He effectively revived Kalinga, a prestige on the Indian
सबकंटिनेंट तेणु इंडिया जो रिवाइव करते कलिंगर प्रेस्टिज भारत इंडिया इज नाउ ए गुड आर्टिस्ट गुड आर्किटेक्चर गुड स्कल्पचर कोणार्क टेम्पल जो खंडगिरी उदयगिरी ना पूरा वर्ल्ड रे यूनेस्को साइट पाई बर्तमान माने वर्ल्ड रे सो मेनी पिलग्रिम्स ऑडियंस कम्स टू आसंदी ओडिशा एंड दे also they also encourage करछन they also appreciate करछन इंडिया ओडिशा कल्चर बिकॉज़ ऑफ कोन खार कारबळ खारबळ जोगु बर्तमान इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर रे ओडिशा also माने फ्लोरिश हेची ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेस्टीज एंड द इंडियन सबकंटिनेंट हमें पढ़िबा द इंडियन नेशनल आर्मी एक्चुअली हमें पढ़िबा व्हाट रोल डिड द आईएनए ट्रायल्स प्ले इन द फैसिलिटेटिंग इंडिपेंडेंसी व्हाट रोल डिड द आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स प्ले इन द फैसिलिटेटिंग इंडिपेंडेंसी एक्चुअली जो व्हाट इज द रोल ऑफ इंपैक्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी रो जो ट्रायल हेतला माने जो आईएनए लेड बाय को सुभाष चंद्र बोस लेड तांको द्वारा लेड करथिले सेटा को जो ट्रायल होता इन द रेड फोर्ट रे जो होतला तार व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस रे स्वाधीनता रे माने कोन सेटा थिला इंपैक्ट एक्चुअली गुड इंपैक्ट थिला Indian National Army trials also known as Red Fort trials. Actually, you know, 1946. Actually, मुख्य जिसटा कौन the English person, British person they rule India शासन करते with the help of पूरा already cooperated with the Indian Army, Navy and Air Force. Collectively, they helped the British to rule over India. When for the Indian National Army जो trial है so Indian Navy, Air Force and Army they already rebel कले. So actually British thought भाविले if Indian Army Air Force and Navy they not cooperate with us so how will rule with such a vast country केम शासन करे एतोड़ देश को तेणु जेटा इम्पैक्ट बदर पड़ला कौन है इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स ऑल्सो नोन एज द रेड फोर्ट ट्रायल्स कहते हमें 1946 वे मैसिव टर्निंग पॉइंट गोटे आसला इंडियन इंडिपेंडेंस रे आसला गोटे आसला 45 1946 एक्चुअली वेयर ए मास actually red fort is a massive turning point actually a massive turning point in the Indian independence movement एक massive turning point था बहुत बड़ा turning point था actually massive means पूरा भारत का सारे मतलब सब लोग को पूरा turning point mass protest आया independence movement they acted as a catalyst they eventually made by British rule in the Indian unsustainable actually sustainable तो स्थिर तो British turning they acted as catalyst the British were sustainable थे माने वो स्थिर थे exist थे so help of Indian Army so first time eventually made British rule uncertain British मानक जो देखा तांका सिंहासन हलिला बुझे तो Indian unsustainable by their सिंहासन their crown their माने crown ता तांकर हलिला unsustainable हो गेला unification of the political parties तापर भारत political parties एकाठी हो गेले actually दिन भोट रे बतन देखा जो आदि टाइम ऑफ जेंती कोन इश्यू हम देखा देउछंती काले बतन लोक हम खरा हेबे सेंती बतन इंडियन यूनिफिकेशन हेला पॉलिटिकल पार्टी के थिले हमर हुई द मन ट्रायल होतला ए हमर कॉलोनल प्रेम सहगल आज शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो कॉलोनल गुरुबख्श सिंह धिल्लन ये थिले सिख थिले और मेजर जनरल शाहनवाज खान ही वाज अ मुस्लिम थिले हिंदू सिख एंड मुस्लिम क्रिएटेड एन अ रेयर मोमेंट ऑफ द कंप्लीट नेशनल यूनिटी actually India these are national unity actually 3% they are Hindu belongs to Hindu Christian and the Muslims पूरा Indian माने तापर Hindu Muslim Christian they also united हे गेले जदी leader of Hindu Muslim Christian ही परसे ताले people are kind of united हे करिवे so they also be united हे गेले rare moment of complete national unity देखाला भारत रे major political groups like the Indian National Congress Muslim League and the Akali Dal all came together एकडेसली to defend the Indian soldiers भारतीय सोल्जर को डिफेंड करिया पई माने केस लड़िया पई दे फाइट फॉर द लेड द ट्रायल ऑफ लेड द लॉयर पैनल टाको लीड कले कि नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू एंड डिफेंड हमर हिंदू सिख क्रिश्चियन मुस्लिम्स they all are united political groups like Indian National Congress Muslim League and all are united he gale massive public outpouring actually massive public outpouring पूरा public outrage दिखाला पूरा आंदोलन दिखाला मूवमेंट mass movement दिखाला British expected the public to view the INA as a traitors actually British thought of traitors means कौन what कहते treason जो sedition माने देशद्रोह या traitors जो देशद्रोही माने British thought expected कि people who thinks themselves as a traitor people who have हमको देशद्रोही धोखेबाज but the opposite happened in the trial spark means जो हमरो निया अग्नि उद्गीरण हुए
स्पार्किंग करे नेशनल प्रोटेस्ट देखा मासिव प्रोटेस्ट देखा आंदोलन देखा डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन कले सब ब्रोक आउट अक्रॉस द सिटीज लाइक कलकत्ता ब्रोक आउट माने स्टार्ट है अक्रॉस द सिटी लाइक कलकत्ता देखा मासिव डेमोन्स्ट्रेशन देखा पीपल प्रोटेस्ट कले दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता सब सिटी रे अगेंस्ट माने अगेंस्ट द ब्रिटिश बट फॉर फेवर ऑफ द दिस पर्सन धिल्लन एंड सेन था पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पॉलिटिकली मोबिलाइज देखा the Congress formed an Indian Defence Committee कला जवाहरलाल नेहरू मन सब डिफेंस कमिटी कले व्हिच इंक्लूडेड प्रोमिनेंट लीडर्स जो माने प्रोमिनेंट लीडर्स सब थे इंक्लूड प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक कि जवाहरलाल नेहरू भालू भुल्लाभाई देसाई ये शॉर्ट क्वेश्चन गोटे भुल्लाभाई देसाई जवाहरलाल नेहरू ये थे जो माने डिफेंस पैनल माने जज पैनल रो से माने लीड करथिले एंड सो मुस्लिम लीग रो मोहम्मद अली जिन्ना ही वाज आल्सो लीड करथिले जो लॉयर्स पैनल इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्सेस कौन इम्पैक्ट है ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्सेस माने ब्रिटिश इंडिया माने इंडियन आर्म ता ब्रिटिश कंट्रोल थिला सो दिस इज दैट इज कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्सेस दिस इज परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट दे आर स्लो हो जाय जदी ताको स्पीड देखन दे स्पीड होसी सेटा आपण से स्लो कर देख परिबे दिस इज परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल द ट्रायल्स most significant the British realized they could not longer rely on the loyalty of Indian soldiers actually British rule over India for the reliance विश्वास करिया relation विश्वास rely of Indian forces but no longer they thinks that India the loyalty of Indian soldiers already reducing कमी जाउची तंकर जो loyalty माने अन्य जो राजा प्रजा that is the relation था British realized that could be longer rely on the loyalty of Indian soldiers could no longer rely बेसी दिन आउ रिले हे परिबो नै विश्वास करि होबनी sympathy in the ranks of Indian soldiers sympathy so Indian soldiers in the British army जो navy air forces थिले began to identify with the INA patriotism began आरंभ कले to identify करिया पे with the INA patriotism माने Indian nationalist coup जो Indian national army who led by the Subhash Chandra Bose ताको से patriotism भाबिले patriotic भाबिले patriotic माने देश भक्त भाबिले but devotive rather than their oath to the crown actually Indian army air force semanakar oath thila ka to the crown को माने ब्रिटिश ताकर रानी की क्वीन को देर ओथ थिला जने शपथ कोन नियंती जे ओथ नियंती जे आमे देश पई रानी को पई मरिबो जीवन देबो किंतु से देयर फेथ ताकर फेथफुलनेस पैट्रियटिज्म ओबीडिएंट लिखा हला अगपति टुवर्ड्स द इंडियन जो आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी लेड बाय द सुभाष चंद्र बोस को जो आर्मी को देखा हला ताकर तो रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट देखला 1943 मुख्य दिस इज द मेन कॉज मुख्य कारण डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द इंडियन ट्रायल्स सेलर्स इन बॉम्बे रिवोल्ट एक्चुअली इंडियन आर्मी जो नेवी दे बॉम्बे एरिया बॉम्बे रीजन से इंडियन नेवी ऑलरेडी रिवोल्टेड करले अगेंस्ट द ब्रिटिश व्हिच वाज द फाइनल सिग्नल टू द ब्रिटिश दैट ब्रिटिश का फाइनल सिग्नल थिला दैट देयर मिलिटरी नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन इंडिया इंडिया से माने एग्जिस्ट करबे नहीं control over the Indian is collapsing तांगर control over the Indian empire by Indian colony was collapsing कर जातला reducing कर जातला pressure on the British policy तो British policy से pressure देखाला the intensity of the protest force the British realized that the stake in India would require massive military force दरकार माने सच्चे vast country India से बहुत बड़ा country सच्चे vast country if we यदि हमें रूल करिवा the rule over Indian सच्चे vast country so it is impossible without military without loyal military dakare loyal air force dakare otherwise such a vast country not a rule it is impossible so require massive military forces dakare for that they no longer possessed after the world war ii after the world war ii indian actually the population Indian population already against of the British India when Indian army air force and navy they are against the British India Britishers so they no longer they thought they no longer exist in India no longer exist कर परियो नहीं already on the arrival of the cabinet mission then cabinet mission asila arrival of the cabinet mission and the eventual decision for the transfer of power माने actually British are so intelligent थिले यदि if Indian totally माने all Indian air force army they will revolt कर देबे तल then British will be kill मरि जिवे they will firing हे जिवे they will shot माने गोली करी मार देबे by the Indian army वाला मारि देबे before ता पूर्व why they transfer power न कर देबे with silently से कौन कर ट्रांसफर ऑफ पावर कर देले by the rule Indian Independence Act तापर कैबिनेट मिशन
आराम से देश छाड़ी पड़े अदरवाइज जब समय अपेक्षा करते दे विल टेक टाइम नहीं था दे इंडियन आर्मी एयरफोर्स दे किल देम मार दी था दिस इज आल्सो गुड पॉलिसी माने डिप्लोमेटिक पॉलिसी भल थिला discussion of the main principle of the अलख महिमा धर्म discussion main principle कौन महिमा धर्म already माने इंडिया महिमा गोसाई led by the महिमा गोसाई founder by महिमा गोसाई is a unique monotheistic religious monotheistic actually one god India Odisha India Hindu धर्म 33 crore gods exist कर देवता वो ओबे जगन्नाथ जी लिंगराज शिव सप्त so many but monotheistic माने one god religious movement है धार्मिक movement सब ओडिशा that emerged in the 19th century means 1800 to 1900 भितर 1918 से 1900 भितर as a protest against ritualistic practice actually in India but ritualistic practice actually हमर सब थिला माने यज्ञ रिचुअल्स इस धर्म व्हाई कम्स टू इंडिया कहीं इंडिया को आसिला बर्तन बिकज माने इन हिंदू धर्म कि अलग सब धर्म रे सो मेनी जो सैक्रिफाइस बलि ऑफर्स दान दक्षिणा सब एक्चुअली एंड जो कम्युनल पुनर कम्युनलाइजेशन नथिला माने हमर जो कम्युनलाइजेशन लड़ाई भाइलेंस नथिला सेतला हमर इथिला कोन कास्टिज्म थिला डिस्क्रिमिनेशन थिला अनटचेबल अच्छा अच्छा ऐसे जिंस जो एमानकर बर्तमान नो रिलीजन आंकर किसी रिलीजन किसी यूनिक पूरा समस्त सम्मान ऑल इक्वालिटी से सब जिन आरंभ माने हैला भक्ति धर्म ताबे जो संस्कृत भाषा बिनो सब धर्मटा वेद उपनिषद देर टिपिकल थिला कॉम्प्लेक्स थिला बट एरा इजी सब थिला सेते सब विभिन्न सब धर्म नानक चैतन्य सो मेनी ये महिमा गोसाई भीम भई सब मेनी हमर जो अतिव जनकर भागवत ऐसे सिंपली सब लिखा हला तो 19th सेंचुरी सब आज प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट माने अगेंस्ट रिचुअलिस्ट प्रैक्टिस हमर जो रिचुअलिस्ट अगेंस्ट ता विरुद्ध रे जाउतला हमर जो यज्ञ रिचुअल्स ऑफर टेंपल्स प्रेयर ये सब जिंस आइडोलेटरी मूर्ति पूजा एंड द कास्ट सिस्टम जो जाति प्रथा ए मंदिर रे ई कास्ट एंट्री कर परिबे एग्जिट कर परिबे दैट इज द सो मेनी सब हमर रहितला कोन त कोंती सब इग्नोरेंस रहितला अंधविश्वास रहितला तेणु कोर प्रिंसिपल ऑफ महिमा धर्म प्रिंसिपल कौन सा महिमा धर्म कोर मुख्य कौन थिला मोनोथिज्म वन गॉड अलेख ब्रह्म ब्रह्म मीन्स जो आत्मा वन आत्मा द प्राइमरी बिलीफ इज द वन सुप्रीम फॉर्मलेस गॉड कॉल्ड अलेख ब्रह्म अलेख एक्चुअली वन सुप्रीम फॉर्मलेस गॉड कॉल्ड अलेख बा ब्रह्म वन गॉड इनडेस्क्राइबेबल माने वर्णना करियबनी इट इज माने कहते अनलिमिटेड अनंत असीम एंड महिमा गोसाई फिलॉसफी believe God cannot be depended by the idols images actually fellows believe करथिले God cannot be depended by the idols actually God is unlimited everywhere is God actually तो how ए idol गोटे मूर्ति किपरि रिप्रेजेंट करियो बाय द आइडल्स और इमेज God केमती माने God तो अनंत everywhere find so how he exists एबे गोटे आइडल भीतर एने इमेजेस केमती रिप्रेजेंट करिवे बोलो तो सब जगह रे अछि so that is रिजेक्शन ऑफ द आइडोलेट्री को रिजेक्शन कर देले मूर्ति पूजा इमेज and महिमा धर्म strictly forbids the worship actually सेतो कास्टिज्म थिला तो लोअर कास्ट पीपल नॉट एंट्री इनटू द टेंपल्स तेन संक मध्य मध्ये बहुत माने देयर डिफरेंशिएशन थिला से भेद विभेद तो दे लाइक कले सब आधार कोनोसी मंदिर कोनोसी छुआ अछट अनटचेबिलिटी नथिंग पूरा सिंपल ओपननेस एवरीबॉडी तो महिमा धर्म स्ट्रिक्टली forbids the worship of idols worship of the idols already forbid strictly forbid मना पूरा मना पूरा stones or any physical representation of the divine stones or tree everything any physical representation माने कौन सी रिप्रेजेंटेशन माने कोन हमर माने जनक पई आउ जने भगवान को पई गोटे पत्थर सेंती जिंस सब कपड़ा कन्ना सिंदूर एवरीथिंग सी दे रिजेक्ट कर देले एवरीथिंग सी एनी साइन को से ओनली माने से कहथले माने महिमा दे बिलीव करथले गॉड इज एवरीवेयर इज नॉट एनी फिक्स इमेज फिक्स तंगर से इमेज किछि नै अपोजिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम से अपोजिशन करथले विरोध करथले अगेंस्ट सेंटर पिलर ऑफ द फेथ थिला इन बिलीफ इन द ह्यूमन इक्वालिटी तंगर थिला सेंटर पिलर तंगर थिला फेथ विश्वास थिला मनुष्य सम्मान इट रिजेक्ट द ट्रेडिशनल वर्ण कास्ट सिस्टम वर्ण जाति वर्ण कास्ट जो हमर वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मणवाद को मुख्यतः दे विरोध करथले actually it rejects the traditional varna caste system reject करथले traditional varna system teaching the that all humans are equal in the eyes of the सब ह्यूमन को से माने are equal in the eyes of the अलेख ब्रह्म को eyes रे all human are equals no casteism no
person is high, তারপরে elite ধনী গোষ্ঠী, nothing, all are same. Sun worship niti, while they don't worship the sun as a god, while they don't, the followers perform prayers at sunrise, surya sakale or sunset रे, after the sunset they never take any food, before the sunset ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି, before the sunrise ପୂର୍ବରୁ perform prayers at sunrise, worship the sun as a god, don't worship the sun as a god, କିନ୍ତୁ they face the sun during these times, they face the sun during these times as is considered the most powerful. Actually they don't worship sun as a god, sun ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ, because what they believe sun is powerful energy, sun gives energy ଦଉଛି, face the sun during these times as is considered the most powerful manifestation of the formless divine energy. Actually ସେ କହୁଥିଲେ sun is formless divine energy, ଗୋଟେ ଦୈବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ spiritual powers ଗୋଟେ sun ଟା. asceticism and the simplicity, जो ବୈରାଗ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ୍ୟ, asceticism ମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ, simplicity ମାନେ ସାଧାରଣତଃ. religion emphasizes simple austere lifestyles, actually ତାଙ୍କ lifestyle ଟା ଥିଲା, and the higher order of monks ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, higher order of monks ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଥିଲା, are expected to the lead a life of wandering, wandering ମାନେ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ ସବୁଆଡ଼େ. religion emphasizes simple austere lifestyle, higher order of the monks ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର, they are ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାକୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, expected to lead a life of wandering, not staying the same village, not staying in one, ରହିବ, if you stay ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ you have to ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ଷ୍ଟୋର ଫୁଡ୍ ୱେଲ୍ଥ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସେ ୱାଣ୍ଡରିଂ, ସେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ବୁଲିବେ, not stay anywhere, not stable, they are unstable, wandering, not staying the same village for the more than one night, ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୁ ଅଧିକ ରହୁନଥିଲେ, and accepting only cooked food from household, ଖାଲି cooked food, not raw food, କଞ୍ଚାମାଲ ନଉଥିଲେ ଷ୍ଟୋର କରୁଥିଲେ ଲୋଭ ଆସିବ. actually the policy of the religion already different, ପୁରା different ଥିଲା, ମାନେ actually the ଲୋଭ greed ଏସବୁ not born, ଜନ୍ମ ହବନି, cook food ରାନ୍ଧିବ, ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଯେତିକି ଖାଇବ ସେତିକି ନେବ, you will receive as much as possible, you could necessary you could accept, ମାନେ you will accept it, otherwise how much food you will not accept, because କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଗହମ ଡାଲି ସୁନା ରୂପା that you will accept more, ଅଧିକ ନେଇଯିବ. strictly dietary laws ଥିଲା ତାଙ୍କର, followers must finish their evening meal before sunset, ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର meal, the dinner କରୁଥିଲେ before sunset. they are also prohibited from consuming intoxicating ମାନେ ମଦ substance or meaty intoxicating ଜୁଆ injurious to health, ମଦ liquor ଗଞ୍ଜା tobacco not consuming, prohibited from consuming. universal brotherhood ତାଙ୍କର ଥିଲା, ପୁରା ଭାତୃତ୍ୱ ଥିଲା, ବୈଶ୍ୟ ଭାତୃତ୍ୱ brotherhood. the movement promotes peace, non-violence and a sense of community among all practitioners. universal brotherhood actually the movement promotes peace, shanti, non-violence, ahimsa and the sense of community, ମାନେ जो ଜାତି ଆମର among all practitioners, community ସବୁ ପୁରା practitioner ଭିତରେ ଗୋଟେ common unity ଥିଲା, regardless of their social background, the social background anyhow any things any caste, but they were united ଥିଲେ one community, ତାକୁ କହନ୍ତି ମହିମା ଘୋଷ, ମହିମା community. ତା ଦେହରେ there is no any brahmin ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର nothing, it is a wonderful ଥିଲା, ମାନେ it is the best ଥିଲା, ଗୋଟେ unity and brotherhood ଥିଲା ତାଙ୍କର. significance in ଓଡ଼ିଶା, ମହିମା ଧର୍ମ signed a significant popularity among the marginalized ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ତଳ ଗୋଷ୍ଠୀ, vulnerable society, ଆଦିବାସୀ tribals, vulnerable people, ତାକୁ କହନ୍ତି marginalized, ମାନେ ତଳ ସ୍ତର, backward sections of the society, ଗୋଟେ popular ଥିଲା in ଓଡ଼ିଶା, because it is offer a spiritual path free from the dominance, spiritual path free, ପୁରା spiritual path free ଥିଲା from the dominance, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାବା nothing, everywhere same, everywhere get ମାନେ all religious persons they get equal opportunity, ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ, equal status ପାଉଥିଲେ, respect ପାଉଥିଲେ, not high low କିଛି ନଥିଲା, there is no upper lower, ବଡ଼ ବାବା ବଡ଼ senior higher lower ନଥିଲା. dominance of priestly classes and priestly ଥିଲା, priest classes, ପଣ୍ଡିତ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପୁରା spiritual path free, ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ସେ ଧର୍ମ ଦେବେ ସେମିତି nothing, only ମହିମା ଗୋସାଇଁ, all are and expensive rituals, କିଛି expensive rituals ଯଜ୍ଞ ଅଫର that was not, ସେଟା କିଛି ନଥିଲା. the poet ଭୀମ ଭୋଇ is perhaps the most famous proponent ଥିଲେ, ଭୀମ ଭୋଇ ମାନେ ହି popularize କରିଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ, ମହିମା ରିଲିଜନକୁ with their singing style, ତାଙ୍କ song ରେ singing ରେ, whose devotion hymns ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଭଜନ continue to spread the principle today also
भीम बोई song bhajan that also popular among all Odisha, all